पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दे पर बोलने के कुछ घंटों बाद जवाब के अधिकार के अंतर्गत बोलते हुए भारत ने उनकी बातों का करारा जवाब दिया। भारत की तरफ से प्रथम सचिव मिजितो विनितू ने देश का पक्ष रखा। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुनाई। उन्होंने इमरान खान पर निशाना साधते हुए कहा, इस हॉल में मौजूद लोगों ने ऐसे इंसान को सुना जिसके पास खुद अपने देश के लिए दिखाने को कुछ नहीं था और न बताने के लिए कोई उपलब्धि, न दुनिया को देने के लिए कोई सुझाव था। इसके बजाय सभा के माध्यम से झूठ, गलत सूचनाओं को फैलाया। उन्होंने कहा कि ये वही देश पाकिस्तान है जो खुखार आतंकवादियों को पेंशन देता है। हमने जिस नेता को आज इस सभा में सुना, ये वही नेता है जो अपनी संसद में ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को शहीद के रूप में दर्जा दिलाता है। जोरदार जवाब देते हुए मिजितो ने कहा कि ये वही नेता इमरान खान है जिन्होंने 2019 में अमेरिका में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उनके देश में अभी भी लगभग 30,000 से 40,000 आतंकवादी हैं जिन्हें पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया है। Mr. President, I am exercising India's right of reply to the diatribe that we heard this morning from the Prime Minister of Pakistan. Mr. President, this August forum witnessed today a new low on its 75th anniversary. The leader of Pakistan today called for those who incite hate and violence to be outlawed. But, as he went on, we were left wondering, was he referring to himself? This hall heard the incessant rant of someone who had nothing to show for himself, who had no achievements to speak of, and no reasonable suggestion to offer to the world. Instead, we saw lies, misinformation, warmongering, and malice spread through this assembly. The words used today at this great assembly by the leader of Pakistan demean the very essence of the United Nations. For a nation that is deeply buried in medievalism, it is understandable that the tenets of a modern civilized society, such as peace, dialogue, and diplomacy, are far-fetched. Allow me, Mr. President, to jog their minds a little about the stellar record of Pakistan. This is the country that brought genocide to South Asia 39 years back when it killed its own people. This is also the country that is shameless enough not to offer a sincere apology for the horrors it perpetrated even after so many years. This is the same country that provides pensions for dreaded and listed terrorists out of state funds. This is the same country that has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. The leader whom we heard today is the same person who referred to the terrorist Osama bin Laden as a martyr in his parliament in July. The same leader who spewed venom today admitted in 2019 in public in the US that his country still has about 30,000 to 40,000 terrorists who have been trained by Pakistan and have fought in Afghanistan and in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. This is the country that has systematically cleansed its minorities, including Hindus, Christians, Sikhs, and others, through the abuse of its blasphemy laws and through forced religious conversions. For someone who professes to be a champion of Islam, this is also a country that has encouraged killing of fellow Muslims merely because they belong to a different sect or to a different region in Pakistan, and through sponsoring terrorist attacks against its neighbors. The only crowning glory that this country has to show to the world for the last 70 years is terrorism, ethnic cleansing, majoritarian fundamentalism, and clandestine nuclear trade. Mr. President, let me assert here loud and clear. The Union Territory of Jammu and Kashmir is an integral and inalienable part of India. The rules and legislations brought in the Union Territory of Jammu and Kashmir are strictly internal affairs of India. The only dispute left in Kashmir relates to that part of Kashmir that is still under illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to vacate all those areas that it is in illegal occupation of. What should rather be on the agenda of the United Nations is Pakistan's deep state and its unrelenting political and financial support to terrorist organizations and mercenaries which are a threat to global peace and security. The only way for Pakistan to become a normal country is to abjure its moral, financial, and material support to terrorism,
turn its attention to the problems faced by its own population, including its minorities, and stop misusing UN platforms to further its nefarious agenda. Thank you, Mr. President. भारतीय प्रतिनिधि मिजितो विनितो ने कहा कि जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ही भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लाए गए नियम और कानून भारत के आंतरिक मामले हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान जब अपनी बात किसी भी बड़े मंचों पर रखता है, उसे भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ती है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में इमरान खान ने बोलना शुरू किया, उधर भारत ने वॉकआउट कर दिया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा की 75वीं वर्षगांठ के दौरान भी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आए। कश्मीर मुद्दे पर हर बार मुंह की खाने के बाद भी इमरान खान नहीं सुधरे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मंच का कीमती समय भारत की बुराई करने में खत्म कर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की सेना पर कई झूठे आरोप भी लगाए। इमरान के विरोध में उस समय यूएनजीए के कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद भारतीय राजनयिक ने वॉकआउट किया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि आरएसएस गांधी और नेहरू के सेक्युलर मूल्यों को पीछे छोड़ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। इमरान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का राग भी अलापा। उन्होंने कहा कि भारत ने कश्मीर पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है और वहां के लोगों के मानवाधिकार का हनन कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र को अपने रेजोल्यूशन के तहत इसका हल निकालना चाहिए। उन्होंने अनुच्छेद 370 के खात्मे का जिक्र करते हुए कहा कि इससे कश्मीरी लोगों के अधिकारों को खत्म किया गया है। अपने भाषण के दौरान इमरान खान मुसलमानों के मसीहा बनने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ हुए कथित अत्याचार को लेकर विरोध जताया। उन्होंने भारत पर स्टेट स्पॉन्सर इस्लामोफोबिया फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत में आरएसएस का नाम लेकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया।